benchmarking the ratios. Benchmarking ratios is a concept where we compare the value of a ratio with a certain standard or a benchmark. इस benchmarking का मकसद ये है कि हम ये जानें कि क्या एक रेशो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है और कितनी फेवरेबल है। बेंचमार्किंग करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स के लिए ये बेंचमार्क्स या स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ भी हुआ करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये देखें कि वो कौन से ग्रुप्स हैं जो कि समहाउ किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड हैं। As we said that we may call them the stakeholders of a particular business organization. These are the groups who use these financial statements and are interested in the results and interpretation of these financial ratios. Top of the list is company's own management, the people who are running the show, that is, the main administration, the board of directors, the managers, the sales, marketing manager, production manager, administration, and all those people who are running the show are somehow concerned about the performance of the company because it reflects their own performance. So they are interested in knowing the results of these ratios and they want those ratios which are directly related to the performance of management to be good and favorable. Similarly, there are those people who lend money to the business. वो लोग, वो companies, organizations जो business को loan देती हैं या business को उधार देती हैं. I'm referring to lenders and creditors. They obviously want the business to be in good shape and in good condition. वो चाहते हैं कि बहुत सी रेशोज फेवरेबल रहें ताकि उनके लोन और उनका इंटरेस्ट उनको वक्त पर मिलता रहे. So they have their concern about the ratios. The shareholders, who are actually the real owners of a company, they certainly want the company to be doing very well. And all those ratios which reflect the performance of the company in terms of the benefits to the shareholders, they are certainly concerned about it क्योंकि वो उस कंपनी के रियल ओनर्स हैं. इसी तरीके से वो पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स जो फ्यूचर में इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, दे आर ऑल्सो वेरी कीन टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, द ट्रेंड्स ऑफ द कंपनी, एंड सो they are the users of financial ratios. Then the customers, the group of people who are somehow related to the company or the business, they are purchasing their products, they are purchasing their services, so they also want to know that how good the company is doing. We also have government authorities, government bodies, we call them regulatory authorities. For example, we have got FBR, we have got SECP. These are the organizations or authorities which want to know that how well or how poor a business is performing. So they want certain ratios to be up to the mark. So they are also the users of these financial ratios. And of course, the analysts who want to know that how the company is performing so that they can give their analysis. Then we benchmark these ratios. As we have just discussed, that these benchmarks may not be the same for all the groups of the people. And at times, the favorability of a ratio is conflicting. That is, हो सकता है कि एक group of people एक ratio को ज़्यादा पसंद करे कि उसके अंदर अगर इजाफा हो तो वो बेहतर है. And there may be another group जो ये पसंद करे कि इस ratio को कम होना चाहिए. So the different benchmarks that we use for comparing the ratios is number one, the past performance of the company, यानी कंपनी की पिछले सालों में क्या ratios रही हैं. We can have a look at it by looking at the trends of the ratio. कंपनी की अपनी एवरेज यानी कोई भी रेशो अगर हम लेते हैं तो उसका जायज़ा इस हवाले से लिया जा सकता है कि उस कंपनी की अपनी पिछले सालों में क्या एवरेज रेशो रही है, और अगर वो उस रेशो से बेहतर है जो आज की रेशो है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी इज डूइंग वेल.
Similarly, we also consider the industry's average. इंडस्ट्री या सेक्टर वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो सिमिलर तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, यानी वैसे ही बिजनेस में इन्वॉल्व है जैसा कि एक बिजनेस या कंपनी जिसकी हम रेशोज कैलकुलेट कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर रेशोज का एक खास लेवल होता है जिसको हम कह सकते हैं कि वो उनकी कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं या कॉमन बेंचमार्क्स हैं। सो वी ऑल्सो कंपेयर them with the industry's average. So that is also another benchmark. Then there are certain general standards. कुछ रेशोज ऐसी हैं जिनके लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रेशो इतनी होगी या इससे कम या ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रेशो है या ये फेवरेबल रेशो है। अगरचे ऐसे बेंचमार्क्स जो कि जनरल या यूनिवर्सल हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। कुछ केसेस के अंदर जब एक कंपनी या एक बिजनेस किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट होता है, यानी बहुत से केसेस में जब फंड्स या फाइनेंसिंग प्रोक्योर की जाती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी बैंक के साथ, तो कंपनी को बहुत से कोवेनेंट्स साइन करने होते हैं, यानी ये एग्री करना होता है कि वो बहुत से काम जो वो करेगी या बहुत से काम वो कंपनी नहीं करेगी। और इन कोवेनेंट्स में ये भी लिखा होता है कि कौन सी रेशोज को कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा किस लेवल पर रखा जाएगा। तो उस केस के अंदर वो कोवेनेंट्स जो बाइंडिंग कोवेनेंट्स कहलाते हैं रेशोज के बेंचमार्क के तौर पर हमारे सामने आते हैं। इसी तरीके से ये जो रेशोज के टारगेट हैं ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए भी डिफरेंट होते हैं। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मर्जर के अंदर जाने वाली है तो फिर वो किन रेशोज को बेहतर रखना चाहेगी ताकि वो मर्जर के अंदर जा सके। सिमिलरली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मजीद पैसा बोरो करना चाहती है और वो बैंक्स के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जाना चाहती है तो बहुत सी रेशोज होंगी कि जिनको वो देखना चाहेगी कि ये बेहतर और फेवरेबल रहें। इसी तरीके से अगर एक कंपनी अपने डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग करना चाहती है, बहुत से टुकड़ों में बंटना चाहती है, जिसको हम स्पिन ऑफ्स या डाइवेस्टिचर का नाम देते हैं, तो उसको कुछ रेशोज को देखना होता है कि इन रेशोज को बेहतर होना चाहिए ताकि एक सक्सेसफुल डाइवेस्टिचर हो सके। इसी तरीके से जब कंपनीज जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, yani the companies which are owned by a family or a small group of people, when these companies are to expand, they have to generate more funds from the shareholders. What do is they go public, यानी वो आम लोगों को अवाम में अपने शेयर्स ऑफर करती हैं so that they can generate equity capital. When a company is going public, certainly the company has to have some ratios favorable for the potential shareholders. So such companies would like to work on the ratios for a certain period of time before they go public so that their financial statements and their ratio analysis become very attractive for the potential shareholders.